Hello, very good evening to all. Yeah, Vivek, good evening and right to you. Yeah, everything is fine. Okay. Everything is fine. Yeah, good. Okay. So, very good evening to all. Okay, so let's start with this chapter. So, we already cover a lot of things in this chapter, like we cover the electrochemical cell, we already cover the Nernst equation, right? And in last class, we also cover electrolytic cell. That what do you mean by the Faraday first law? What is even Faraday second law and all this thing. ओके तो हमने यहाँ तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आज हम क्या देखने वाले हैं? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द what happened in case of products like cathode anode in presence of aqueous solution or in absence of aqueous solution. तो we already studied this thing. Okay, चलो। Okay, so we are going to start from the product of electrolysis part 2. चलो। No, what happened when we do the electrolysis of aqueous copper sulfate? So we all know ना copper sulfate क्या होगा? Copper sulfate जैसे ही टूटेगा तो हमें क्या देगा बेटा? Cu plus and SO4 negative. So it will give us Cu plus and SO4 negative. Now अब एनोड पे कौन जाएगा? तो हम सबको पता है एनोड पे आइदर SO4 और H2O। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा आउट ऑफ सल्फेट और वैसे H, वही हम लोगों का एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो कितना होगा? अगर आप बात करते हो तो कौन जाता है? तो हम लोग को सीरीज पता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा है और भी से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस करने। डन। तो हमने यहाँ पे क्या लर्न किया था? एवरीवन से भी बताओगे एक बार कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोई चीज ऑक्सीडेशन पे जाए, राइट, इफ वी वांट कि मेरा ऑक्सीडेशन पे एनोड पे एक्ट करे तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा? कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो वो एनोड पे जाता है। उसी तरीके से कैथोड पे देखो तो कॉपर का +34 वोल्ट है पॉइंट, हाइड्रोजन का .004 वोल्ट है। यानी किसका वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली कैथोड का, राइट। तो वो हमारा क्या होगा बेटा? एज अ कैथोड पे मिलेगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि O2 पे मिलेगा, O2 एट एनोड, एंड जो कॉपर मिला है वो कहाँ मिला है? दैट इज एट कैथोड। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज। एवरीवन जल्दी से बताओ एक बार, ये क्लियर हुआ कि नहीं? फास्ट। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार कंफर्म करो जल्दी फटाफट। ओके, चलो, गुड। नाउ नेक्स्ट वी हैव electrolysis of aqueous copper sulfate in copper electrode. So the first one is electrolysis of copper sulfate in inert electrode, right? तो इससे पहले क्या था? Inert electrode. Now we are going to see
the electrolysis of aqueous copper sulfate in copper electrode. Okay, so what happened with the copper electron? Can anyone tell me what is the difference between this inert electron and copper electron? Yes, anyone? What is the difference between these two? Copper electron and inert electron. Okay, let's see. Okay, so here we have copper electron, right? So we know एनोड पे कौन जाएगा either we have a sulfate or water. So out of sulfate and water, with having the lowest reduction potential value, so lowest reduction potential value किसका है H2O का, that is 1.3 volt. Higher oxidation potential value किसका है, that is SO4. तो कौन जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, मतलब SO4. सिमिलरली कैथोड पे कौन जाएगा, ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो. तो हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या मिला, CuS कंज्यूम, यानी एनोड पे कॉपर और कैथोड पे भी कॉपर. तो दोनों जगह एनोड और कैथोड पे हम लोगों को कॉपर मिलेगा. ठीक है, चलो. अब आता है व्हाट इज द प्रोडक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous H2SO4. कि aqueous H2SO4 के केस में व्हाट यू विल गेट द प्रोडक्ट. ठीक है, तो चलो देखते हैं aqueous H2SO4 के केस में क्या मिलेगा. डन. ओके, सो एट कैथोड क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या है, H प्लस. व्हाट इज दिस, H प्लस. तो H प्लस का रिडक्शन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में. सिमिलरली अगर मैं एनोड की बात करूं, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा. अब किसका, सल्फर का या H2O का. तो आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखनी है, राइट. सो अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो यहाँ पे H2O का होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड है तो H2SO4 का होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या मिल जाएगा, तो अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो we get O2 at anode and H2 at cathode. And if the concentrated are present, then we get H2O8 twice negative at anode and hydrogen at cathode. तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है. डन. यस एनीवन. इट्स डन. Yes. चलो. So we already study about the Faraday first law. We also study about the Faraday second law. और उसके बाद हमने कैथोड पे पढ़ा, राइट. उसके बाद हमने पढ़ा कैथोड पे. तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, जिसका ई नॉट वैल्यू हाइयर पॉजिटिव हो, मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा हो. तो जब भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी तो उसको कैथोड पे रिएक्शन होगा. और एनोड पे कब होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम हो. ठीक है, नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वी हैव, ये सारी वैल्यूज हम लोगों को याद. Now, we are going to start the conductivity of the electrolytic solution. कि what is this electrolytic solution all about? What is the conductivity of solution? How will you find this conductivity? ठीक है, चलो. So let's start with. So in this we are going to study about the conductivity cell, measurement of conductivity, and Kohlraasch law. Right. So this is the learning objective. So what is this conductivity cell all about? किसको बोलोगे conductivity cell? तो मान लो we have a electrolytic solution, right? So in electrolytic solution
अगर हम यहाँ पे प्लेटिनाइज इलेक्ट्रोड्स को डिप्ट करें, तो वी ऑल नो व्हाट इज रेजिस्टेंस एवरीवन. So resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. So we can say that कि resistance is equal to rho L by A, right? We can say that. So resistance is equal to rho into L by A, where rho is called resistivity. So what is this rho called? So rho is called resistivity, also known as beta specific resistance. So only ये वाला एक जो फॉर्मूला है ना, वो तुम लोगों को याद रखना है. इस फॉर्मूले के हेल्प से हम बाकी सारा डिराइव कर लेंगे. डन? क्लियर है? तो देखो बाकी हम कैसे डिराइव करने वाले हैं. सो वी ऑल नो R इज इक्वल टू रो L बाई A. नाउ what is the SI unit of rho beta? Can anyone tell? So the SI unit of rho is centimeter ohm. How will you find rho? If R is equal to rho L by A, then rho is equal to R into A divided by L. Okay. So this is how we can find rho. So R is equal to rho L by A. So rho is equal to R into A by L. So what is the unit of R? We all know ohm. Hmm? And area centimeter, length centimeter. So centimeter से centimeter square cancel. So that is ohm centimeter, or we say ohm meter. So this is the unit of resistivity. Fine. So this is how we can find the resistivity. Done, everyone? Right? Sir, doubt. Yes, ask. Uh, Platinized electrodes means ओके, गुड क्वेश्चन. बेटा प्लेटिनाइज रिकॉर्ड मींस मतलब इलेक्ट्रोड्स पे हम लोगों ने प्लैटिनम का कोटिंग किया हुआ है, राइट, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और वो एक दूसरे को इनर्ट रहे इसलिए बेटा. sir. Other than platinum, shall we use? यस, एनी अनरिएक्टिव मेटल वी कैन यूज, राइट, जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें. ठीक है. So basically, if someone asks why only platinized electrode we are using, so you can say that कि platinized electrode are basically they are coated with the thin layer of platinum black, right? To minimize the electrode polarization, which can interference with the accurate measurement. जिसके चलते measurement आप सही से कर सको, ठीक है? सो इफ एनीवन, कोई भी बेटा आपसे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कंडक्टिविटी सेल व्हाई वी आर यूजिंग प्लेटिनाइज इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे? टू अवॉइड द पोलराइजेशन इफेक्ट. हम पोलराइजेशन इफेक्ट को क्या करना चाहते हैं? अवॉइड करना चाहते हैं. तो पोलराइजेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे प्लैटिनम का कोटिंग करते हैं. डन. तुम ये भी डाउट पूछ सकते थे बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग दैट इज द पोलराइजेशन इफेक्ट, राइट. सो पोलराइजेशन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? कि रेजिस्टेंस सॉल्यूशन का चेंज ना हो नियर द इलेक्ट्रोड ड्यू टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मतलब चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ना हो सॉल्यूशन का. हम चाहते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो उसके रेजिस्टेंस में नियर द इलेक्ट्रोड. इसीलिए हम लोग यूज करते हैं प्लेटिनाइज इलेक्ट्रोड. डन. चलो. ओके ना. नाउ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज
conductance. So if someone asks what is conductance, तो आप क्या बोलोगे बेटा? It is the reverse of the resistance. So the reverse of the resistance is known as conductance. Done? The inverse of the resistance R is called conductance, that is G. So we can write G is equal to 1 by R. So only you need to remember one formula, that is R is equal to rho L by A. By using this same formula now, R is equal to rho L by A, you can derive all the formula. For example, if someone asks what is the formula of conductance, then what is the formula we have? G is equal to 1 by R. Just put the value of R here. So R is nothing but rho into L by A. So we get 1 upon rho into A by L. This is the formula of G. Got it? Then this is how we can find the conductance formula. Okay. Now, the next important thing is that is the what are the factors that affect the electrolytic solution, कि कौन कौन से factors हैं जो electrolytic solution को affect करते हैं. ठीक है? So let's start with the factors जो electrolytic को affect करेंगे. So the first one is a nature of electrolyte. Okay. Second one is a nature of solvent. Third one is the size of ions. Next is the concentration of electrolyte. And इसके बाद क्या आ जाएगा आपका temperature. So these are the factors basically which affect the conductance of electrolytic solution. तो ये ऐसे factors हैं जो conductance को affect करते हैं. किसके conductance को? Electrolytic solution. तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को अफेक्ट करेंगे. कौन कौन से? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, साइज ऑफ आयंस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया और टेम्परेचर हो गया. सो दीज आर द वेरियस वे which affect the conductance of electrolytic solution. Done? जैसे कि लेटर एज्यूम, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हो सकता है. द वन विच कंप्लीटली डिसोसिएट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एक जो पार्शियली डिसोसिएट है, दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होगा. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स बेटा, basically electrolytes are those substance which when dissolved in water they give ions. तो वो ions produce करता है and due to this ions they produce electricity. For example, this NaCl. So when we put NaCl in water they give Na plus Cl. So that is called electrolytic solution. Okay. Similarly, if we have a glucose, right? This is called non-electrolyte because in water they do not produce ions. So those which produce ions is called electrolyte. Done, everyone? Just confirm me once and just give me a minute, beta. Just give me a minute. जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है?
Sir, sir, Yes. Yes. Now you can ask. Yeah, all right. Okay. So you're asking anything? ठीक है. So the main thing which you need to remember कि conductance of electrolytic solution किस पे डिपेंड करेगा, राइट? सो किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट, so the first is nature of electrolyte, whether the electrolyte is strong or weak. So if the strong electrolyte are strong electrolyte means beta which completely dissociate, जो water के अंदर जाके completely dissociate हो जाए. And what do you mean by the weak electrolyte? जो water के अंदर जाके completely dissociate ना हो. ठीक है. Next, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि भाई सॉल्वेंट का नेचर क्या है. नेचर ऑफ सॉल्वेंट मीन कि उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या है. उसमें जैसे मान लो वी हैव अ थ्री सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1, 2 एंड 3. तो आप ध्यान से देखो, तीनों में हमने एक चीज को डाला, तो पहले सॉल्यूशन में तुरंत नीचे आ गया, दूसरे में धीरे धीरे आ रहा है, तीसरे में और धीरे धीरे आ रहा है. तो मतलब उस सॉल्यूशन का विस्कोसिटी कितना है, उस सॉल्यूशन की आयनिक मोबिलिटी कितनी है, तो उस पे भी हमारा ये डिपेंड करेगा. ठीक है. तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है. सो आयनिक मोबिलिटी हमारा डिक्रीज होगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. साइज पे भी डिपेंड करेगा बेटा, कि जिसका जितना छोटा साइज होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, उस हिसाब से डिफाइन होगी, उस हिसाब से बढ़ेगी. अब देखो, नेक्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, कि अगर आपका नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा यानी कॉन्सेंट्रेशन पर मोल बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करेगा. और लास्ट बोला है हम लोगों ने बेटा टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके चलते उसकी आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स. याद रखना है कि ये सभी हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं conductivity of a cell को in electrolytic solution. Done? Yes, जल्दी बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? Sir, Done? Good. चलो. partial dissociation means Sorry. partial dissociation. पार्शियल डिसोसिएशन मीन्स बेटा जिसका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब अगर आपने उसको वाटर के अंदर डाला तो दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली लाइक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इंस्टेड दे डिसोसिएट इन सम परसेंटेज वाइज. लाइक पहले वो 10% डिसोसिएट हुआ, फिर आपने थोड़ा और वाटर ऐड किया, तो हो सकता है वो 10% और डिसोसिएट हो जाए. तो ऐसी चीजें जो धीरे धीरे डिसोसिएट होती है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसोसिएशन. डन. Okay, sir. चलो. नाउ सो दिस इज G इज इक्वल टू 1/r. तो ये G किसके इक्वल हो गया? G इज इक्वल टू 1/r. वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. सो G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू A/L. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द G. ओके. देखो, for example, here the length of the conductivity solution is L and area is A. So 1 upon rho is also known as conductivity. Remember this thing? 1 upon rho, that is 1 upon resistivity. तो 1 upon resistivity को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं. सो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा? ध्यान से बताओ. L by A is known as cell constant.
तो अभी मैं इसको डिफाइन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना अभी। सो वी नो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? सो वी ऑल नो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? R into A by L, right? Now this 1 upon R and L by A. So this L by A is called cell constant. What is this called? Cell constant. So this L by A is called cell constant. तो K का K रहा, 1 by R को G लिखा, and cell constant we represent as G star. So this is the combined formula. कि conductivity is nothing but G into G star. Done? Yes, everyone. Got it? What is the formula of conductivity? Sir, explain once again. Okay. I'm saying what is conductivity? So as the name suggests now, conductivity. So conductivity is reciprocal of resistivity. That is 1 upon rho. Now we know the value of rho, huh? Because we know R is equal to rho L by A. So what is rho? Rho is nothing but R into A by L. Hmm? This is the formula of rho. R into A by L. So we just put the value of rho here. So when they put the value R into A by L. So 1 upon R is known as G and L by A is known as G star. So this is how we can calculate G into G star. Done? Chalo. Now, let's see the classification of substance on the basis of conductivity. Okay, how will you classify the substance on the basis of conductivity? So, first one is conductor, insulator, and semiconductor. So, what are the conductors? Conductors are those having conductivity values greater than 10 to the power 4, right? So, if there any substance having conductivity greater than 10 to the power 4, we call it as conductor. Like sodium we have, copper we have, silver we have, gold we have. So anything which have a conductivity value greater than 10 to the power 4 is known as conductor. Similarly, what is insulator? So insulator is nothing but a substance having conductivity less than 10 की power minus 10. तो जिसका conductivity 10 की power minus 10 से कम है, that is glass, Teflon, these all are called insulator. Now, what are the semiconductor? So those substance whose conductivity lie between 10 raised to the power minus 7 to 10 raised to the power 4. मतलब जिसकी कंडक्टिविटी 10 raised to the power minus 7 से तो ज्यादा है, बट 10 raised to the power 4 से कम है, तो इन सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, राइट? सो ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी वी एक्चुअली क्लासिफाई सब्सटेंस एज अ कंडक्टर, insulator and semiconductor. Is this clear? Okay, chalo, very good. Now, thus, what are the superconductors? So, superconductors are those which having the zero resistivity or we say infinite conductivity. तो सुपर कंडक्टर्स हम उनको बोलेंगे बेटा जिनका रेजिस्टिविटी तो जीरो हो, मतलब कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो. नाउ मेटल्स एंड alloy at a very low temperature they behave as a superconductors.
मतलब 0 से 15 केल्विन तक अगर आप कर दो मेटल्स का, तो दे बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर्स. नाउ द ceramic materials and mixed oxide show superconductivity even at 150 Kelvin, like C60, CH2RB, HgBa2Ca2, Cu3OX. So these also superconductivity even at a higher temperature. Now, so we have a one question. So we all know that in this question they need to calculate the cell constant L by A. So conductivity of 1 by 50 normality KCl at 298 Kelvin is this, and the resistance of the cell containing the solution is 100 ohm. What is the value of cell constant? You need to calculate cell constant. ठीक है, चलो कैसे निकलेगा cell constant? Cell constant you need to calculate. Yes, calculate everyone. Cell constant L by A. We all know the formula. That is conductivity is nothing but 1 upon R into L by A. This is the formula, and this is called cell constant. This is called cell constant. So K is equal to 1 by R into L by A. This L by A is called cell constant. Okay. Now, conductivity is given. Yes. 0.00 0.001765. R is also given 100 ohm. So that is L by A. कितना है? 0.1765. That is 0.1765 centimeter inverse. Is this correct, everyone? Yes, सबको समझ आ गया था? देखो, so this is the correct answer. Okay, चलो. Yes, anyone having any kind of doubt you can ask. एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग. Yes, Thanush, what happened?
Got it? Right. So let's see the measurement of conductivity, right? कि how will you measure the conductivity? So basically, the conductivity is measured on the basis of this principle. मान लो अगर ये वाला सेल है जिसकी कंडक्टिविटी सेल है हम लोगों का, तो दिस इज रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, तो हम क्या करेंगे, व्हेन द डिटेक्टर शो नो करंट, अगर इसमें से कोई भी करंट नहीं होगा, सो R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द R2. सो R2 कितना आ गया, R1 अपॉन R3 इंटू R4. सो यहाँ से हमारा K का वैल्यू आता है, के का वैल्यू कितना निकल के आ गया, के का वैल्यू निकल के आ जाता है जी अपॉन R2. और भी से जी इज इक्वल टू 1/R2 था, तो वहां से हमने यहाँ वैल्यू को पुट किया. सो हमें एक मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद रखना है बेटा. व्हाट इज दिस मोलर कंडक्टिविटी? दैट इज कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर ऑफ सब्सटेंस. सो दैट इज के इंटू वी. दिस फॉर्मूला वी नीड टू रिमेंबर. नाउ वी पुट द वैल्यू, वी नो वी इज इक्वल टू एन अपॉन एम. अगर एन 1 मोल है तो दैट इज 1/m. नाउ अगर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो दैट इज 1000/m. सो v इज इक्वल टू 1000/m. सो दिस इज द फॉर्मूला वी गेट, दैट इज द k cap m is equal to k into 1000/m. Now molar conductivity increase with dilution for the strong electrolyte, and for the weak electrolyte the molar conductivity, what happened, molar conductivity क्या होगा? सो ऑलवेज रिमेंबर, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ये याद रखना है. नाउ अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो ये कैपम का फॉर्मूला होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा 1/c होगा. मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब डाइल्यूशन का कम होना, और अगर कॉन्सेंट्रेशन घटा मतलब डाइल्यूशन बढ़ा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा कम होने लगेगा. राइट. नाउ this is the graph. This curve is for the weak electrolyte and this is for strong electrolyte. So in next class, we are going to study this graph and this formula in detail way. So we are going to start from this molar conductivity itself from the next class till just revise till conductivity. जब तक conductivity तक पूरा revise कर लो. What is conductivity? How this value comes, what is conductance, what is resistance. In next class, we are going to start from the molar conductivity. ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी से ही नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. करते हैं फिर अगले क्लास में मिलते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू ऑल.